Okay, hello everyone. So now we will implement this stack using Python. We have to implement this data structure stack. So you know that stack is what? It's a last in first out kind of data structure, LIFO. All the time it allows the insertion and deletion at a single end. We have to implement this by using Python. So we will use the same code of previous video where we have implemented queue. So if you have not watched that video, please go and watch that video first. So here, as I was telling all the time, the top is the only place which is responsible for insertion and deletion of your node. So top will be responsible here for insertion and deletion. So initially, if your top or your stack is empty, if your stack is empty, so in this case, we say your top is what? Top will be all the time -1 because this is the indexed way of allocating data. Here, if you are inserting something, so we are calling that operation as a push. अगर आप insert करते हो तो उसे आप push बोलते हो. If you are deleting something, so you call that as a pop. Okay, so whatever the data we are inserting, it will go at the bottom. Let's say this is the data I'm inserting here as 40. It will go like this. It will be considered as push. After 40, I'm inserting 60. So 60 will go after 40. Then I will insert again, let's say 70. So 70 will go above that 60. So like this, your insertion will happen. That is push will happen. ठीक है? Now, आपको अगर डेटा रिमूव करना है या पॉप करना है, सो व्हाट विल बी कमिंग फर्स्ट? पहले 70 निकलेगा आपका. अगर आप पॉप करोगे तो पहले 70 ही आएगा. देन 70 will be removed and at the top what you will have? आपका 60 रहेगा. ठीक है. So again if you will do let's say pop operation, so the element from top will come. Again if you will do pop operation, यानी आप फिर से अगर डिलीट करने के लिए ट्राई करोगे, so you will get the result what? 40 because that is at the top. ठीक है. 40 के बाद भी अगर आप पॉप करोगे, so you will get what? Empty stack. Empty stack. That will be your result. So by using this all assumptions, we will now try to use the same code of queue and we will just modify this for a stack. So this was your code. Let's say here what we have considered something as a front and rear into queue. तो हमें queue में front rear लगता था, but stack just require what? It just require top. So you can just say you have something as a top. And initially this is what? -1. So please see, we have created one queue class. I will just rename this as a stack now. Okay? I will say this is a stack. And we have defined the size of queue as 100. So I will say now stack I have by the name st with the size 100. Okay? All the elements are initially here, you can say zeros, but size we have restricted to 100. Okay? Then next we have considered something like insert. तो insert को हम यहाँ पे क्या बोलेंगे? We will call this as a push. ठीक है? This is a push operation. So I will just rename this. अगर आप insert करते हो तो आप push करोगे. ठीक है? After this you are inserting some element. तो जैसे आप insert करोगे तो क्या increment होगा देखना. हमेशा आपका top increment होता है. ठीक है? But initially we have considered here the condition जब queue overflow होती थी, यानी queue full होती थी. तो queue कब full होती थी? जब आपका rear 99 को रीच करता था. तो उसी तरह से यहाँ पे आप इंसर्शन कर रहे हो टॉप पे. सो इफ योर टॉप इज 99, देन यू कैन से योर स्टैक इज ओवरफ्लो. योर स्टैक इज ओवरफ्लो लाइक दिस. वी हैव डन नथिंग, वी हैव यूज्ड द सेम कोड ऑफ क्यू. ठीक है, हमने क्यू का ही कोड यूज किया है, उसे ही हम थोड़ा रिमॉडिफाई कर रहे हैं जस्ट फॉर स्टैक. ठीक है, सो दिस इज इट. सो इफ योर टॉप इज 99 means it's reaching to its maximum index, 0 से 99 तक जाओगे यानी its maximum index, तब आपका stack overflow, you are not allowed to enter new data into it. ठीक है. उसके बाद अगर नहीं है तो आपको first data insert करना है. तो first data कहाँ पे जाएगा? What will be the index? You can see, let's say this is again your stack. ठीक है, this is just your stack. You want to insert the data inside this, so you know that what is the index of a very first data. जब एम्प्टी होता है तब उस केस में आपने बोला कि टॉप क्या होना चाहिए? -1. बट अगर फर्स्ट डेटा डालोगे सो दिस विल बी व्हाट? एट 0 इंडेक्स. 45 अगर आप इंसर्ट करते हो तो 0th इंडेक्स पे जाएगा. मींस दिस टॉप व्हिच इज नाउ इनिशियली -1, इट विल बी इंक्रीमेंटेड टू व्हाट? 0. तो इसीलिए हम इस टॉप को क्या करेंगे? इंक्रीमेंट कर देंगे. सो यू कैन राइट लाइक दिस, टॉप प्लस इक्वल टू 1, और यू कैन राइट टॉप इक्वल्स टू self dot top plus 1 like this. Anyhow you can follow. ठीक है. So this is it you will do. After that
दिस इज नाउ अगेन QT, सो QT नहीं, हमने इसे ST बोला है नाउ, स्टैक। और आप डेटा कहाँ पे इंसर्ट करोगे, देखो यू आर इंसर्टिंग योर डेटा। सो यहाँ पे इस स्टेप में क्या है किया है देख लो, दैट इज स्टेप 11। दिस इज जस्ट इंक्रीमेंट, यू कैन से योर स्टैक इंडेक्स। ठीक है, तो स्टैक का इंडेक्स हमने इंक्रीमेंट किया, जो इनिशियली -1 था यहाँ से 0 हो जाएगा। ठीक है, आफ्टर दैट इसी 0th इंडेक्स पे हमें क्या डालना है, आपका नया डेटा इंसर्ट करना है, दैट विल बी टेकन एज अ आर्गुमेंट फ्रॉम द यूजर। ठीक है, तो x इज दैट डेटा, इट विल बी स्टोर्ड वेयर, इट विल बी स्टोर्ड इनटू योर दैट सेम स्टैक जिसका साइज 100 है। ठीक है, और उसमें भी कौन सा इंडेक्स पे जाएगा, टॉप पे जाएगा, टॉप मींस 0th इंडेक्स पे जाएगा, लाइक दिस यू विल डू। ठीक है, सो दिस इज जस्ट यू कैन कंसिडर एज ऑफ नो इंसर्ट ऑपरेशन। ठीक है, सो दिस वोंट बी देयर। ठीक है, यहाँ पे फ्रंट का तो कोई रोल ही नहीं है, दैट्स व्हाई यू कैन जस्ट स्टॉप हियर ओनली। So this is push. Now we can go for pop, means delete. तो pop हो या delete हो, both are same. तो pop भी कहाँ से करोगे, pop करना है आपको तो आपको हमेशा top से ही रिमूव करना पड़ेगा। बट हियर द वेरी फर्स्ट कंडीशन आई हैव मेंशन, अंडरफ्लो मींस एम्प्टी। ठीक है, सो एम्प्टी कब होगा कोई भी क्यू, जब या स्टैक व्हेनेवर योर टॉप विल बी -1। so that condition also you can mention here, it's if self dot top equals to -1, then you can say your stack is underflow, or you can say it's empty। ठीक है, इस तरह से आप करोगे। सो दिस इज द वेरी फर्स्ट कंडीशन दैट शुड बी चेक्ड बाय योर पॉप फंक्शन। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद फिर से जो भी चीज आपकी टॉप पे होगी उसे आपने रिमूव करना है। सो इट विल बी अगेन एट द ST। ठीक है, नॉट QT। एंड आप कहाँ से रिमूव करोगे, टॉप से रिमूव करोगे। ठीक है, एंड इट विल बी स्टोर्ड इनटू वन वेरिएबल। सो इफ यू आर परफॉर्मिंग पॉप ऑपरेशन, तो पॉप अगर यहाँ पे करते हो, ठीक है ना, यू हैव वन एलिमेंट, अगेन आई एम एडिंग वन मोर एलिमेंट विच आई वाज टेलिंग, आपको पॉप करना है, पॉप ऑपरेशन आप परफॉर्म करते हैं। सो व्हाट एलिमेंट विल बी कमिंग फर्स्ट, द एलिमेंट विच इज एट द टॉप ओनली। तो आपके टॉप पे अभी क्या है, टॉप पे 65 है। दैट्स व्हाई इफ यू आर डूइंग दिस ऑपरेशन, पॉप को अगर आप कॉल करते हो, सो ऑल द टाइम इट शुड रिटर्न व्हाट, इट शुड रिटर्न योर 65, it will return that 65 only। I hope you are understanding this। so this is the top। then इसके बाद आपको टॉप को इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट भी करना पड़ेगा। सो व्हाट विल यू डू, आपको देखो, आपको स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा, इट वोंट बी हियर। ठीक है, ये चीजें तो अभी यहाँ पे होगी नहीं, फ्रंट रियर। ठीक है, तो टॉप का आपने डेटा ले लिया। ठीक है, ये कौन सा इंडेक्स पे था, इट वाज लेट्स एट 1। नाउ टॉप पे अभी कौन सा डेटा आ गया, ये 45, जिसका इंडेक्स क्या है, 0 है। इफ यू विल गो विद दिस केस आल्सो, तो यहाँ पे भी इंडेक्स देखो 0 1 एंड 2 इस तरह से था। तो पहले 70 निकला, ठीक है, और 70 निकलेगा, देन 60 निकलेगा, देन 40 निकलेगा। मींस यू आर डिक्रीमेंटिंग दैट टॉप। आपको टॉप को क्या करना है, डिक्रीमेंट करना है। इस केस में वही है, पहले 65 को निकालोगे, देन 45 विल बी पॉप्ड अप। तो इसीलिए टॉप विल बी वो डिक्रीमेंट। सो यू कैन जस्ट डू लाइक दिस। आप यहाँ पे क्या करोगे, you will write again self dot st of again top। इससे आप क्या करोगे, डिक्रीमेंट। सो आई डोंट वांट दैट st, आई जस्ट वांट टॉप। सो आई विल राइट self dot top equals to self dot top -1। ठीक है, सो इट विल वर्क लाइक दिस। ठीक है, सो whenever you are popping any element, after that you should just decrement that top। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। ठीक है, तो ये थोड़ा समझने का ट्राई करो। देन दिस फंक्शन विल रिटर्न व्हाट, इट विल रिटर्न x, x यानी जो भी एलिमेंट आपने पॉप किया है टॉप से। ठीक है, सो इट विल बी देयर। सो वी हैव डन नथिंग न्यू, we have used the same code of your queue data structure। Okay, then we have the next thing, that is again you can consider peak। So peak is the next operation that we should do। Peak क्या है, peak means you should be able to print the element which is at the top place। तो टॉप का अगर आपको एलिमेंट लेना है, तो फिर से वही है कि आपने पहले चेक करो वेदर योर स्टैक इज एम्प्टी और नॉट। तो अगर आपका टॉप -1 है, तो फिर से वही यू विल से योर स्टैक इज एम्प्टी। ठीक है, एल्स केस में आपने डायरेक्टली आपका फ्रंट यानी टॉप का एलिमेंट यहाँ पे अभी प्रिंट करना है। टॉप एलिमेंट इज व्हाट, इटसेल्फ डॉट st ऑफ यू कैन से टॉप एलिमेंट। सो इट्स टॉप, दैट इज योर पीक। ठीक है, देन अभी डिस्प्ले करना है। तो डिस्प्ले के लिए आप क्या क्या कर सकते हो, देखो जैसे पहले वही है कि आप स्टैक का डेटा डिस्प्ले कर रहे हो, तो पहले जस्ट डू चेक वेदर योर स्टैक इज एम्प्टी और नॉट। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, टॉप को क्या कर देंगे, यहाँ पे पहले इनिशियली -1 है क्या नहीं, दैट वी विल चेक। ठीक है, सो वी विल जस्ट चेक इफ द टॉप इज -1, देन वी विल से स्टैक इज एम्प्टी। ठीक है,
Then अगर ये केस ट्रू नहीं है, then what you will do, you will just now check for that elements which should be printed. ठीक है, तो हमें पहले कौन सा एलिमेंट प्रिंट होना चाहिए? If this is your stack, let's say I have again one more element 75 which has the index 2. तो पहले 75 should be printed, then 65 should be printed, then 45 should be printed. Last in first out. ठीक है, तो फर्स्ट वाला आउट होगा 75, then 65, then 45. So this should be your output. ठीक है, if you are displaying the elements from stack. तो उसी तरह से यहाँ पे करना है। तो आपको इनिशियली स्टार्ट कहाँ से करना है? आपने स्टार्ट करना है हमेशा टॉप से। ठीक है, सो यू विल राइट हियर टॉप, और आपको डिक्रीमेंट करना है, वन बाय वन जाना है इनटू रिवर्स ऑर्डर। दैट्स व्हाई वी विल यूज हियर रिवर्स ट्रैवर्सिंग। इट विल बी -1 and -1 लाइक दिस। ठीक है, इट बिलोंग्स टू योर अगेन व्हाट आई वुड से फॉर लूप। ठीक है, तो फॉर लूप समझो, यू विल गेट इट। ठीक, so this is it. Then we have printed what? We have printed again st of I. So we have used one for loop which is iterating some I for the range what? Self dot top and -1 and -1. So you are going into decreasing order by one reverse direction. So after this what you will do? You will just create the object for stack. ठीक है, so object का नाम क्या है आपका? Q ही है। As of now we will just keep it as it is. ठीक है, and we will use the same functions. Let's say we had insert के बदले हमने नाम क्या लिया है? push I guess. delete की जगह हमने लिया है pop. peek is as it is, display is also as it is. ठीक है, so we will try to run this whether it works or not. Okay, so these are the options we have. So let's say we have the very first choice, insert. It's asking enter element. So why it's asking enter element, you can just see. अगर आप choice 1 देते हो तो उस केस में this condition gets true. It's asking enter element, and जो भी element आप ले रहे हो x, it's getting pushed into that function जिसे आपने यहाँ पे define किया है। ठीक है, push. It will check again initially top 99 है क्या? नहीं है, top is -1. That's why what will happen? Your top will be incremented first. -1 से क्या हो जाएगा? 0 होगा, और वही 0 इंडेक्स पे आपका x स्टोर होगा। So let's say I want to create this stack 45, 65, 75. So I'm inserting 45. ठीक है, again it's asking for choice. ठीक है, so again let's say choice is 1, insert. Then 45 के बाद what was that? 65. So 65. Then again insert. Next is 75. ठीक है, so we have inserted some 3 elements. ठीक है, पहले हमने 45 को insert किया, then 65 को, and at last 75 को. And now I just want to see like what are the nodes. तो display is that function ना, तो just do check. Display में हमने क्या किया है? We are just using this option. If choice is 4, then go for display function. और display में क्या है? देखो, this is your display function. It will again check whether top is -1. If it's -1, then say stack is empty. अगर नहीं है, then top से directly reverse direction में I को iterate करो। ठीक है, so just say 4. You can see we have got like this 75, 65, 45. So the very first element is coming first like this. ठीक है, so top पे आपको मिल रहा है now element which is 75, then 65 and then 45. The required thing we have got. ठीक है, then next check for top element. So top is what? 75. तो इसके लिए हम peek करेंगे. So just do like this. You can see top element is 75. ठीक है, now try to delete. तो delete अगर करोगे तो फिर से कौन सा delete होगा? 75. So go for 2. ठीक है, you can see deleted element is 75. Now again you can see what are there into stack. So you can see 60 and 45 is left. ठीक है, so this is how you can perform all the operations. Now I'm exiting this. So I hope you understood like how we have implemented this stack. I know that the video was kind of fast as compared to Q because we have used the same code of Q here and same construct, same logic. ठीक है, सिर्फ वहाँ पे front rear था, यहाँ पे सिर्फ top है. So I hope you understood this. If you have some doubts, you may just tell me. Okay, you can reach out anyhow. Let's say you can comment anyway. Okay? Thank you so much.